Hello everyone, let's go ahead with the topic of accounting analysis of financial activities. In the previous class, we had covered the analysis of liabilities and the accounting analysis of leases. Today, we'll be covering the other four heads of financial activities. So first, let's begin with the post-retirement benefits. What do you mean by post-retirement benefits? It generally consists of two parts, pension benefits and other post-retirement benefits. We call them OPBs also, right? So what do you mean by a pension first of all? Pension means any benefits which are provided by the employer to the employee for the services rendered by employee after retirement, right? यही होता है pension. जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को आफ्टर द रिटायरमेंट बिकॉज ही हैड रेंडर्ड सर्विसेज फॉर सम स्पेसिफिक ड्यूरेशन टू द एम्प्लॉयर. दैट इज द थिंग. सी दिस इज द टोटल फ्रेमवर्क of the pension or the post retirement benefits. How does it take place? It is an arrangement whereby an employer provides benefits, that is payments, to retired employees for services they provide in their working years. इन दे वर्किंग ईयर जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की है उसके लिए जब एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है उसके लिए एक अरेंजमेंट होता है. सपोज दिस इज एम्प्लॉयर, this employer is making a contribution towards the third party. This is treated as an independent separate third party. The a contribution is made by the employer to the third party. It can be a financial institution also, or it can be your bank also. It can be anything, right? So employer already advance में वो पैसा जो है बैंक के पास या financial institution के पास contribute करता रहता है, so that whenever they require it after 10 years, 20 years, 30 years, that can be paid back. It can be paid back to the retired employees in that terms of benefit payments, right? So this is the total framework. See, pension plan, it is an arrangement by the employer to provide pension benefits to the employee. So there are three parties if you see. The employer who is contributing to the plan, the employee who is deriving the benefit from the plan, and the pension fund or the pension plan. That is your independent system. It is a very separate entity. It is independent of the employer and is administered by the trustees. So whatever is been contributed by the employer, that gets invested somewhere for some time, and whenever it is required, it is paid back to the employee in the form of pension. So two kinds. First we'll see the pension benefits. Pension accounting requires an understanding of pension transaction. Before going to the accounting part, you need to understand the what is pension transaction, right? These are the other benefit, other post retirement employees benefits. Just a sec. These other pension post retirement employee benefits are certain other benefits provided by employers to retirees. These are generally, see, pension is generally in the form of, it is a monetary form which is given in the monetary form, that is your pension. And anything which is paid other than in monetary form, that forms your other post retirement employee benefits. It can be your house assistance, it can be your health insurance, it can be your life insurance, it can be in any form, right? So these are your other post retirement employee benefits. Let's see, generally the nature of pension plans are two types. First one is defined contribution plan, in which क्या होता है contribution plan, and there is a defined benefit plan. For contribution plan, already there is a fixed amount. Employer जो है वो employee को देता रहता है, employee के account में वहाँ पे pension plan system जो separate entity हमने देखी थी, third entity, उसमें जाता रहता है. Suppose it is paying, 1 lakh a year, so it is going to the employees. उसके बाद इट बिकम्स एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एम्प्लॉय उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू, राइट? तो उसमें गेन होगा, लॉस होगा, दैट रिस्क वुड बी बोर्न बाय द एम्प्लॉय. इट इज सिंपल, देयर आर नो कैलकुलेशंस नीडेड. एम्प्लॉयर का काम सिर्फ इतना है
कि हर एम्प्लॉय को डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ सर्विस एंड देयर ईयर ऑफ सर्विसेज एंड डिपेंडिंग ऑन देयर करंट सैलरी उनका एक फिक्स्ड कर दिया है कि ये मेरी साइड से आपका पेंशन प्लान का कंट्रीब्यूशन जाएगा। सपोज वन इज गेटिंग 1 लाख, उसके बाद वो उसके बैंक उसमें जा रहा है थर्ड पार्टी के पास, सो दैट इज एम्प्लॉयज ड्यूटी नाउ, एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करवा रहा है और कैसे करवा रहा है। बट वी आर कंसर्न अबाउट द डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इन दिस द actual computation is required because the benefit which is determined by the plan कि एम्प्लॉयर के पास ही रिस्क बेयर करता रहता है, एम्प्लॉयर अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करता है, अपनी साइड से इन्वेस्ट करता है, तो उसमें गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, रिटर्न कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, वो सब एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सपोज उसने इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख, वो रिड्यूस होके 80,000 हो जाता है, बट उसको अल्टीमेटली पेंशन एज अ पेंशन 1 लाख की पे करनी है, तो दैट 80,000 it is falling short of 20,000, that 20,000 is to be borne by the employer again एम्प्लॉयर को ऐड करके फिर उसको देना पड़ेगा। इसमें जो भी कंप्यूटेशंस होती हैं those are done by the actuaries. Actuaries are who? Actuaries make predictions. Those are also called as actuarial assumptions. वो अपने assumptions के basis पे जो लोग करते हैं सारी calculation depending upon mortality rate, कि क्या mortality rate है, कि ये individual, ये employee after the retirement कितने year तक he'll be or she'll be living. What is the employee turnover? What is the scenario कि ये voluntary retirement ले लेंगे, employee छोड़ के चला जाएगा, interest and earning rates का क्या status रहेगा, अर्ली रिटायरमेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्यूचर सैलरीज क्या रहेंगी, and any other necessary factor. By taking all these factors into consideration, the computation is done by the actuaries, and they will tell you that this much of the amount employer will be needing to pay the employees their pensions. So here two questions arise. First is, what is the pension obligation that a company should report in the financial statements, and what is the pension expense for the period. That means कि एक तो see there is a word written here, report, it's not compute, right? So एक तो pension obligation जो कितनी है जो financial statements में कंपनी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, because it will be computed by the actuaries, we are not supposed to compute it. And second is, what is the pension expense for the period. तो उस पीरियड में कितने टोटल पेंशन एक्सपेंसेस आएंगे which company will have to bear and how to deal with it, right? See, oh, it's not clear. It is said that pension obligation is the deferred compensation obligation it has to its employees for their services under the terms of the pension plan. So pension obligation is कि एक आपकी deferred payment बन जाती है, एक obligation बन जाती है employer की, so that which the employer has to pay to the employees under any pension plan. So what was there in the beginning? It was calculated on the basis of vested benefit obligation. Vested benefit obligation means based upon the current salaries of the employees, कि employee जितना काम कर रहे हैं उनकी जो current salary है उसके basis पे आप pension decide कर लो and उसको वो pay out करो. Second is, the other method is by taking the present value of the non-vested employees at current salary, that means the future salary. This is calculated on the basis that by the time that individual employee is getting retired, उस time future salaries का क्या status होगा, तो उसके basis पे you decide now, right? So that is your non-vested. Vested क्या होता है? Inherent, right? जो आपने जो काम कर रहे हो inherent है आपका, उसके basis पे. नॉन वेस्टेड है जो आप काम नहीं किया आपने, उसके बेसिस पे when it is decided, depending upon, in simple language, it is based on the future current salary, and this is based on the future salary. But it is said that the best way is by taking the combination of both that was given by the Financial Accounting Standard Board, that you should calculate projected benefit obligation, right? And this PBO, it is to be calculated by taking both current salary and the future salary in consideration, right? So on this basis we decide our pension benefit obligation.
Then measures of the liability. See, it is said that net funded status of the pension plan, it can be overfunded or it can be underfunded. In the sense, it is measured as the difference between the fair value of the plan asset and the projected benefit obligation. एक्चुअली ने हमें डिसाइड निकाल के दे दिया है कि आपकी जो पीबीओ है, सपोज वो निकल के आया है पीबीओ इज इक्वल टू 10 lakhs, राइट, बट हमारी जो फेयर वैल्यू है प्लान असेट जिसमें हमने इन्वेस्ट किया वो बैंक के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, दैट प्लान असेट, दैट थर्ड पार्टी इज कॉल्ड एज प्लान असेट, वहां से हमें मिला है इन्वेस्ट करने के बाद जो टोटल रिटर्न हमें मिला है दैट वी हैव गॉट 8 lakhs. सो दैट मीन्स कि हमने तो वहां पे ऑब्लिगेशन हमारी 10 lakhs थी बट हमारे मिला है ओनली 8 lakhs. दैट मीन्स वी आर अंडर फंडेड, द स्टेटस इज अंडर फंडेड, कि हम लोगों को और इन्वेस्ट करना पड़ेगा या और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट. एंड द अदर वे इज सपोज योर पीबीओ इज 10 and the plan asset have given you the total of 12 lakhs, then that would be a state of overfunded, right. I hope it is clear. Let's move on to the next topic now. Continue. We are talking about the pension expense. Pension expense has 5 components in it. It has 5 components in it. First one is your service cost, other one is interest on liability, third one is actual return on the plan asset, fourth is gain or loss, and the fifth one is your amortization of the prior service cost, right. I'll have to reframe these PPTs. So let's see them one by one. What is service cost? Service cost means actuarial present value of benefits attributed by the pension benefit formula to employee service during the period. That means जो an individual is working right now, right? So if that person is working, उसके बेसिस पे कि ये बंदे ने 1 साल और कंप्लीट कर दिया है, सपोज 1920 कंप्लीट हो गया, 2021 स्टार्ट हो गया है अभी फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए 1 more year he or she has entered, तो हमें फिर से उसका 50,000 और ऐड कर देना चाहिए कंट्रीब्यूशन में. दैट इज द ईयरली सर्विस कॉस्ट व्हिच गेट्स एडेड डिपेंडिंग अपॉन द करंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय. क्लियर है ये कि किसी ने आपके पास 2019 तक काम कर रहा था, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग वो 20 में काम करेगा नहीं करेगा, जैसे ही वो 2021 में एंटर करता है तो आप 50,000 और उसका ऐड कर देते हो टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन. 21 में फिर अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर ऐड कर देते हो, तो जो ईयरली उसकी सर्विसेज के बेसिस पे ऐड करते हो कॉस्ट, दैट इज योर सर्विस कॉस्ट. देन कम्स इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी. सी एवरी लायबिलिटी बेयर्स अ इंटरेस्ट, राइट. वो जो भी लायबिलिटी होती है उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सो इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑन द प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड. उस लायबिलिटी का उस ऑब्लिगेशन पे कितना इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है, so that would be added up and that will form the second component of your pension expenses. सर्विस कॉस्ट आप ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, सर्विस कॉस्ट ऐड कर रहे हो तो आपके पेंशन एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे ना उस ईयर के, and you are adding the interest also, it will also increase your pension expenses for that year. Then we have actual return on plan assets, that is the increase in pension funds from interest, dividends and realized unrealized changes in the fair value of the plan. See, हमने क्या किया था, जो कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर का वो प्लान असेट में इन्वेस्ट कर दिया था थर्ड पार्टी के पास, राइट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था या बैंक था, उसको वो फर्दर इन्वेस्ट करता है, तो वो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से रिटर्न गेन हो रहे हैं ना, दे आर अर्निंग द रिटर्न्स. जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो रिटर्न्स जो आते हैं, अगर वो रिटर्न आपके पास आएंगे जहाँ पे आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो आपके पेंशन एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इफ दोस रिटर्न्स आर नॉट एज द
एज पर द रिक्वायर्ड रेट, देन आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे. सो वी सी द प्लान असेट्स एंडिंग बैलेंस क्या है, उसका बिगनिंग बैलेंस क्या था. एंडिंग बैलेंस इज सपोज 1,20,000 and sorry 12 lakhs and beginning balance is 10 lakhs. 2 lakhs ये है, कंट्रीब्यूशन 50,000 उन्होंने किया था हर साल और बेनिफिट पेड भी 50,000 ही किए, तो जीरो हो गया. सो आपके जो ये एक्स्ट्रा 2 lakhs आपने अर्न किए हैं टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन, वो आपके पेंशन एक्सपेंसेस के ऊपर जो बर्डन आ रहा था उसको कम कर देगा. देन वी हैव द amortization of prior service cost. See, amortization of prior service cost means suppose somebody has been working with me from 2012, but मैंने मेरी कंपनी में पेंशन प्लान स्टार्ट किया 2020 में. बट हाउ अबाउट आई वांट कि मेरे जो एम्प्लॉइज मेरे साथ 2012 से काम कर रहे हैं उनको भी पेंशन का बेनिफिट मिले फॉर दोज 8 years ऑल्सो. जो पहले वाले 8 साल थे उनका भी मुझे पे करना है. और सपोज ऑन एन taking a whole figure, if you take कि 1 lakh per year बैठ रहा था, so that means it comes to 8 lakhs for 8 years, right? So 8 lakh को if I directly enter into the financial year of me into my accounting statements in 2020, तो 8 lakh का direct it will give a big hit, right? एकदम से 8 lakh की liability, 8 lakh का expense आपके सिर पे आ जाएगा. That is gonna hit back your company's position, accounting position. So what would we do? हम उस comprehensive amount को अभी ना पे करके we will amortize it in the coming years in the future. Suppose 2021 में 1 लाख कर देंगे, फिर 21-22 में फिर 1 लाख कर देंगे, उसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे. amortizing it is that taking the amount in the future and then settling it down. That is your amortization. So क्या होगा, ये amortization भी हमें सेट करनी है पुरानी जो है prior service cost, right? Past service cost से related है. So that would also be giving a burden on your financial pension expenses, and your pension expenses will hike, right? It will increase. So plan amendments often include provisions to increase benefits for employee services provided in prior years. Company allocates the cost of providing these retroactive benefits. Retroactive benefits mean retrospective effect से जो करते हैं, जो पहले हो चुकी है उसके लिए, पहले सर्विस जो हम ले चुके हैं उसके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करना. So it benefits to pension expense in the future. It would be adjusted there specifically to the remaining service years of the affected employees. वो employees कब तक हम लोगों के आगे काम कर रहे हैं उनके future years में that amount would be adjusted. And the fifth one is the gain or loss. Gain or loss means जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है मनी, वो कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डाला, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट की हुई है जिससे हम रिटर्न ले रहे हैं, राइट? So there is a volatility. Volatility means uncertainty, ranging, going up and down, up and down. So if that is there, it also gives the appreciation or the depreciation in the stock prices. So आपके जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया स्टॉक प्राइस आपके ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो sometimes it will give you capital gain, sometimes it will give you loss also if it has come down. In case it is a gain, it will reduce your pension expenses. In case it is loss, it will increase your pension expenses. That would be the effect of gain and loss. Then how to report this post-retirement benefits? These are reported, both are reported on the similar format which is given by the SFAS, Statement of Financial Accounting Standards 158. चाहे वो आपके pension benefits है या other post-retirement employee benefits हैं, both are reported on the same format. And this standard mandates extensive disclosure in footnotes, including details about economic and reported amounts relating to the funded status and the post-retirement benefits cost, and other relevant information is given in the notes of the financial statements. So these are the 5 steps procedure for the post-retirement benefits. First, you determine the economic benefit, cost and liability उस asset का. Then making necessary adjustment जो भी होते हैं, actuarial assumption जो actuarial calculate करके आपको देगा. उसके बाद pension risk exposure आपका क्या है, and then consider the cost flow implication. It is also called as cash flow implication. क्या होगा
आपकी कंपनी के ऊपर उन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स का. Then we have the other head, that is contingencies and commitments. First of all, try to understand what are commitments. Commitments क्या होते हैं? It is something which arises out of the law, right? कुछ भी legally जहाँ पे आप involve हो जाते हो वो आपके commitment बन जाते हैं. Suppose you are buying raw material from supplier, okay? So you have made a agreement with the supplier कि okay, I'll be paying you not now, the whole amount will be paid to you next year, but you have entered into the agreement today only. This is your commitment. And suppose you take a back step, that is your afterwards if you come, that agreement will stand legally valid, so supplier can always stand against you. आपने वो कमिटमेंट तो अग्रीमेंट तो किया अभी 2020 में, बट पेमेंट होगी 2021 में, राइट? तो एक्चुअली इफ यू सी देयर इज नो इम्पैक्ट कमिंग ऑन योर कैश फ्लो सिस्टम राइट नाउ. 20 में उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके कैश फ्लो के ऊपर, बट 21 में आपको उसकी पेमेंट्स करनी है. बट दैट कमिटमेंट, that so and so obligation is still standing on company's head, so it would be shown in the footnotes of the financial statements in 2020 also कि हमारा commitment है, हमें उससे उसकी पेमेंट ये सब हमें करनी है अभी कमिंग टाइम में. And what are contingencies? Contingencies means emergencies which are arising. The reason may be due to litigation. Litigation is your lawful reason. Any lawful, कहीं पे sue, आपका कोई केस चल रहा है, आपको कंपनी ने किसी ने आपको सू किया हुआ है, तो दैट वुड अराइज कि इन केस इफ यू लूज द केस, अदरवाइज तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट वुड डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट. इन केस यू लूज दैट केस, and then you'll have to pay the penalty and the whatever the company has sued you for, that payment you'll have to make to the party. But in case it doesn't happen, so it is not happening, it is not existing for that time, right? So the same contingent liabilities are also shown in as a footnote. These are the potential gains or losses whose resolution depends on one or more future events. See, if it is a case of potential gain, then you need not to worry. वो तो जब होगा तब आ ही जाएगा. You need not to be prepared for that, because conservatism system कहता है कि हमें we should be prepared for the losses and we should not be bothered about the profits we are making. So loss contingencies are potential claims on a company's resources and are known as contingent liabilities, right? तो उसके लिए हम prepare रहते हैं. We show it in the as a footnote in the balance sheet. Then comes off balance sheet financing. Off balance sheet financing means a company doesn't include a liability on its balance sheet. Anything which is not included as a liability in the balance sheet but shown separately on a separate sheet, that is your off balance sheet financing. That generally arises because of the joint ventures है, या कोई research and development का काम हो रहा है, कहीं पे कोई lease है, especially in case of operating leases, right? So that is shown as a off balance sheet item. It is not shown in the balance sheet. Off balance sheet of financing to report on the balance sheet, obvious, but it is given, actually it is given कि कंपनी के पास ये सभी है, कंपनी इससे अलग यहाँ भी डील कर रही है. बैलेंस शीट आपके एक पर्टिकुलर यूनिट की, एक पर्टिकुलर बिजनेस की होती है, बट उससे अलग आपके कहीं पार्टनरशिप है, कोई जॉइंट वेंचर है, कहीं पे कुछ और चल रहा है. So you show it on the separate sheet and that you attach it with your main balance sheet, right? So that the other person, the other party gets to know कि टोटल आपका क्या कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ है और कहाँ कहाँ पे आप उसको वो कर रहे हो. सो आइटम्स विच आर शोन ऑन द ऑफ बैलेंस शीट आर leases, pensions, joint ventures, contingent liabilities, redeemable preference shares, and sales of receivables. Give me a minute. And analysts should always read the footnotes contained in the financial statements, as they either disclose off balance sheet financing directly or provide enough information to determine whether the company could potentially enter into off balance sheet financing arrangements or not.
तो उस नोट्स में उनमें ये पता लग जाता है कि बाहर जितने अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए कंपनी का क्या स्टेटस है, वेदर इट हैज द पोटेंशियल टू एंटर इनटू दोस अरेंजमेंट्स और नोट, उनमें बाकी कई बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. Then last one comes shareholders equity. What is shareholders equity? Everybody must be knowing. Shareholders equity is a measure of how much of a company's net assets belong to the shareholders. कि आपकी जो टोटल असेट्स है उसमें से शेयर की ओनर की कितनी कैपिटल है विच आर बिलोंगिंग टू द शेयर होल्डर्स, ओनर्स को कितनी बिलोंग कर रही है. सो शेयर होल्डर्स इक्विटी इज द अमाउंट दैट शोज द कंपनी हैज बीन फाइनेंस्ड विद द हेल्प ऑफ कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स, राइट. So share capital, shareholders equity or net worth, these are all synonyms for this. There are two important sources from which shareholders equity we get. First, the normal जो in the beginning as a promoter जो money invest की गई थी, okay, in the beginning the payment which was made by the owner. And the second is the earning that the company has retained over a period of time through its operations. जो earnings उसने earn की है and जिसको distribute नहीं किया है, which has retained by the company, that also becomes the owner's equity. What is the formula for shareholders equity? It is, there are two formulas, right? Total assets minus total liabilities, and the other way is share capital, total share capital plus retained earnings minus treasury shares, right? That would give you shareholders equity capital. So what are treasury shares? Treasury shares are the stock shares, are the portion of shares that a company keeps in its own treasury, and these shares may have come from the repurchase या buyback जब करते हैं from the shareholders, and वो company के पास रह जाते हैं, so those become the part of the shareholders equity. Those are counted as shareholders shares, stockholders owner shares. These shares do not pay dividends, have no voting rights, and should not be included in shares, but it becomes the capital of the shareholders or of the owner. Analysis of shareholders equity. First is classifying and distinguishing among major source of equity financing, कहाँ से हुई है. Next is examining rights of shareholders of their priorities in liquidation के टाइम में उनके क्या rights रहेंगे, किसको पहले pay off किया जाएगा. Then evaluating legal restrictions for distribution of equity. क्या क्या लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. देन रिव्यूइंग योर कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को कैसे देखा जाएगा. एंड असेसिंग टर्म्स एंड प्रोविजंस ऑफ व्हाट आर द टर्म्स एंड प्रोविजंस which are given for the convertible securities which can be converted, stock options and other arrangements involving issuance of shares, right. So क्या क्या terms and provisions दिए गए हैं वो सब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन, उसको देख के फिर हम लोग करेंगे, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग एनालिसिस ऑफ योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज. In the next class, we'll be starting with the accounting analysis of your investing activities.